Power off. Power on. Pairing. Pairing successful. Connected.
तव गुणा, गाऊ किती तव गुणा द्यावा आधार सकल गुणी जना, द्यावा आधार सकल गुणी जना. हे गणराया, हे गणराया, हे गणराया, हे गणराया. विघ्न विनाशा गौरी हरा नंदना, गौरी हरा नंदना. द्यावा आधार सकल गुणी जना, द्यावा आधार सकल गुणी जना. हे गणराया, हे गणराया, हे गणराया,
अष्टविनायक मोरया, अष्टविनायक मोरया. जय श्री माता जी. उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का आज के सुबह की ध्यान धारणा में हृदयपूर्वक स्वागत है. हम सब श्री माता जी को नतमस्तक प्रणाम करेंगे और हमारी कुंडलिनी उठाकर कवच को धारण करेंगे. हम हमारी लेफ्ट साइड में अग्नि तत्व पाने के लिए 1, 2 या 3 कैंडल जलाकर सही दूरी पर रखेंगे. श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम आज सुबह के ध्यान धारणा के लिए एकत्रित आए हैं. आप हम सभी से ध्यान धारणा कराकर हमारी चक्र और नाड़ी शुद्धता करा दीजिए. श्री माता जी, हमें ध्यान की गहनता प्रदान कीजिए, ध्यान का आनंद प्रदान कीजिए. हमारा राइट हैंड हम लेफ्ट सहस्रार पे रखेंगे. प्रार्थना करेंगे. परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपा करके हमारे मस्तिष्क में आइए. आप सदा सदा के लिए इस मस्तिष्क में वास कीजिए. श्री माता जी, आपके दैवी विवेक से हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण कीजिए. हजारों वर्षों जो अनवांटेड डेटा भरा है उसे पूर्णतया नष्ट कीजिए. हमारे ब्रेन को पूर्णतः स्वच्छ कीजिए. श्री माता जी, यू बी द कंट्रोलर ऑफ दिस ब्रेन. राइट हैंड हमारे अनहद पे रखेंगे. परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपा करके हमारे हृदय में आइए. हमसे हमारा हृदय स्वच्छ करा लीजिए ताकि इस निर्मल हृदय में आपके श्री चरण प्रस्थापित हो सके और हम आपके श्री चरणों की पूजा नित्य करें. ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए. दुनिया की चमक धमक से, दिखावेपन से हमें दूर रखिए. हमें सिर्फ शाश्वत तत्व में रखिए. दोनों हाथ भूमि माता पे हम हमारी कुंडलिनी विश्व महाकुंडलिनी से एकाकार करने के लिए 3 बार ओंकार का आह्वान करेंगे. ओंकार की शुरुआत मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से सहस्रार से होते हुए विराट में मकार का समापन करेंगे. विराट से विश्व कुंडली की शक्ति को सहस्रार द्वारा हम हमारे अंदर लेके आएंगे. सहस्रार से रीढ़ की हड्डी द्वारा हमारा चित्त मूलाधार चक्र से भूमि माता में छोड़ेंगे. पुनः एक बार
विराट से सहस्रार, सहस्रार से विशुद्धि, दोनों कंधों दोनों हथेलियों द्वारा हम अपने चित्त को भूमि माता में छोड़ेंगे। दोनों क्रिया ही 2-3 बार दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर का सारा जड़त्व, सारी नकारात्मकता, असहज प्रवृत्तियाँ, ध्यान के आड़ आने वाली हमारी स्वयं की आदतें, हमारे आसपास के वातावरण की नकारात्मकता भूमि माता के अंदर खींच लीजिए। हमें संपूर्ण स्वच्छता प्रदान कर ध्यान के लिए आवश्यक निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए, ताकि हम इस सामूहिकता का आनंद ले सकें। राइट हैंड श्री माता जी के समक्ष हम हमारे स्वयं के गणेश की जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा चित्त मूलाधार चक्र पर, परम पूज्य श्री माता जी हमारे मूलाधार में स्थित, मूलाधार चक्र में स्थित गौरी माँ कुंडलिनी के गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी ये गणेश, उनकी जागृति के बाद हमारे अंदर सद विवेक, अबोधिता, पावित्रता और मांगल्यता भर देते हैं, हमें गणेश बनाते हैं। हमारा चित्त नाभि चक्र पर, परम पूज्य श्री माता जी हमारे नाभि में स्थित हमारे स्वयं के लक्ष्मी विष्णु के श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। जो गणेश हमारे अंदर समाधान, आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, हमें समाधान के परे तृप्तता में ले जाते हैं, हमारे नाभि में विश्व निर्मला धर्म को स्थापित करते हैं। ऐसे गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। चित्त स्वादिष्टान, श्री माता जी हमारे स्वादिष्टान में स्थित हमारे स्वयं के ब्रह्मदेव सरस्वती के श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। जो गणेश हमें शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या और संपूर्ण परमेश्वरी ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे चित्त की शुद्धता करके हमें निर्मल भक्ति में डुबा देते हैं, हमें विश्व बंधुत्वता से सामूहिकता के कड़ी में बांध देते हैं। ऐसे श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी हमारे भवसागर में स्थित आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरणों के श्री गणेश पूर्णतः जागृत कीजिए। उनके कार्यकाल का गुरु ज्ञान, गुरु शक्ति प्रदान करके जो भी दोष बाधाएं है उसे दूर करने का ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। हमें स्वयं का गुरु बनाइए। हमारे भवसागर में स्थित हमारे सारे अवयवों को शुद्ध और स्वच्छ कीजिए। हमारा चित्त अनाहत पे, श्री माता जी हमारे अनाहत में स्थित माँ दुर्गा के, माँ जगदम्बा के श्री गणेश पूर्णतः जागृत कीजिए। श्री माता जी दुर्गा माँ की प्रेम की शक्ति में हम अपने आप निर्भय बन जाते हैं। श्री माता जी हमारे लेफ्ट अनाहत में स्थित शिव पार्वती के श्री गणेश को पूर्णतः जागृत कीजिए और हमें हमारे आत्मा के प्रकाश में ले चलिए। श्री माता जी हमारे राइट हार्ट में सीताराम जी के गणेश को जागृत करके हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास प्रदान कीजिए। हमारे अंदर पिता का, भाई का, माँ का प्रेम भर दीजिए। श्री माता जी हमारी विशुद्धि में स्थित श्री राधा कृष्ण के गणेश को संपूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी श्री कृष्ण की 16,000 शक्तियों से हमें जुड़ा दीजिए
हमें श्री कृष्ण की डिवाइन डिप्लोमेसी प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमारे लेफ्ट विशुद्धि में स्थित विष्णु माया के श्री गणेश को जागृत कीजिए और संपूर्ण दोषी भाव से हमें मुक्त कीजिए। श्री माता जी हमारे राइट विशुद्धि में स्थित माँ यशोदा के रुक्मिणी विट्ठल के श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत करके हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत कीजिए, साक्षी भाव जागृत कीजिए। श्री माता जी हमारे आज्ञा पे स्थित जीजस मेरी माता के महाविष्णु के श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी क्षमा की महान शक्ति जो आप हमें प्रदान करती है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके सब कुछ भूल जा हमारे साथ घटित होने वाली घटनाएं सब कुछ भूलने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए, ताकि हमारे मस्तिष्क से सारे बुरे विचार, सारी नकारात्मकता नष्ट हो। श्री माता जी हमारा राइट हैंड बैक आज्ञा पे रखेंगे, सर को थोड़ा सा पीछे करेंगे। श्री माता जी हमारे बैक आज्ञा पे स्थित श्री महागणेश, श्री महाभैरव, श्री महाहिरण्यगर्भ के श्री गणेश पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी मैं, मेरे माता पिता और उनके 100-200 पीढ़ियों में से आदि शक्ति के विरोध में कुछ कार्य हुआ है, सत्य के विरोध में कुछ कार्य हुआ है, तो मैं उनकी तरफ से आपकी क्षमा मांगती हूँ। उन सभी को क्षमा प्रदान कीजिए, उन्हें आत्मोन्नति प्रदान कीजिए, उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए और हमें भी उनके कुकर्मों से मुक्त कीजिए। बैक आज्ञा को टैप करेंगे, वापस राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे। चित्त सहस्रार पे श्री माता जी हमारे सहस्रार और उसके आसपास के सारे शक्ति पीठों के श्री गणेश, आदि शक्ति के श्री गणेश को जागृत करके हमें समग्रता प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमारे सहस्रार के ऊपर के सारे चक्रों को श्री गणेश को पूर्ण रूप से जागृत करके हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाइए। विराट से चित्त की सीधी रेखा राइट मूलाधार में। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय है, जो देवों के सेनापति है। श्री माता जी उनकी अनंत शक्तियाँ जो है, वही सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे अंदर प्रस्थापित कीजिए और हमें स्वयं को कार्तिकेय बनाइए। कार्तिकेय का विवेक, सद्विवेक, सत विवेक हमारे राइट मूलाधार में प्रस्थापित कीजिए, ताकि सत्य असत्य का भेद करके असत्य को छोड़ के सत्य पे टिके रहने की शक्ति हमें मिले। हमारा व्यवहार एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जैसा हो। श्री माता जी हमें कार्तिकेय की निरंजन दृष्टि प्रदान कीजिए, ताकि हमारे साथ घटित होने वाली घटनाएं हम साक्षी भाव से देख सके। हम कोई प्रतिक्रिया न दे, कोई भी व्यक्त अव्यक्त प्रतिक्रिया हमसे नहीं निकले। श्री माता जी हमारे स्वयं के कार्तिकेय पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात राक्षस संतरी है। आत्म साक्षात्कार के बाद भी हमारे अंदर जो पशुषम वृत्तियाँ है, जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हें भूमि माता में खींच लीजिए और हमें पूर्णतः सकारात्मक बनाइए। या हम श्री कार्तिकेय और उसके बाद राक्षस संतरी मंत्र का आह्वान लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाथों की स्थिति बदलेंगे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के समक्ष, राइट हैंड भूमि माता पे। विराट से चित्त की एक रेखा राइट लेफ्ट मूलाधार में। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं। हमारे स्वयं के निर्मल गणेश को जागृत कीजिए। उनकी निरागसता, उनकी अबोधिता हम में भर दीजिए, ताकि हमारे अंदर की सारी वासनाएं, सारी एंटेसमेंट, सारी कटुता, सारा ढोंगीपन दूर हो जाए। हम एक बालक की तरह निष्पाप बने। ऐसा बालक जो सदैव अपनी माँ पर ही निर्भर रहता है, ऐसा बालक हमें बनाइए। या हम निर्मल गणेश मंत्र का आह्वान करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त मूलाधार की पिछली पंखुड़ी पर। श्री माता जी हम में इतनी अबोधिता भर दीजिए कि हमारे अंदर पवित्रता प्रस्थापित हो। माता अनुसया की, माता सौदामिनी की पवित्रता से हमें परिपूर्ण कीजिए। सहयोग में स्थित हमारी सारी सहयोगिनियों की पवित्रता से हमें परिपूर्ण कीजिए, ताकि कोई भी नकारात्मकता, कोई अपवित्रता हमारे सामने टिक न सके। हमारा चित्त मूलाधार की अगली पंखुड़ी पर। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री मांगल्यता है। हमें भी गणेश जैसा मंगलकारी बनाइए। जैसे गणेश, श्री गणेश के आगमन से सारा आसमंत मंगलदायी होता है। हर एक के हृदय में एक आनंद छा जाता है। ऐसे ही मांगल्यता हमें प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम जहाँ भी जाए या सहज कार्य करने के लिए जाए, वहाँ का वातावरण आनंददायी, आह्लाददायी, चैतन्यदायी हो। सहयोग के सभी कार्य के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो। लोगों को आत्म साक्षात्कार लेने की तीव्र इच्छा हो। ऐसी मांगल्यता हमें प्रस्थापित कीजिए। हमारा चित्त मूलाधार के बीचों बीच। श्री माता जी हमें गणेश की सारे गुण, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रस्थापित करके हमें स्वयं को गणेश बनाइए। हमें स्वयंभू बनाइए, ताकि हमारे अंदर की गणेश की सारी शक्तियाँ अपने आप प्रस्फुटित हो सके। हमारा चित्त इड़ा नाड़ी पर। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ है, जो हमारे महाकाली के रक्षक है। अपनी प्रज्वलित मशाल से हमारे संपूर्ण ईड़ा नाड़ी में संचार करते हुए हर एक चक्र की नकारात्मकता, सारे दोष बाधाओं को दूर करके उन्हें स्वयं प्रकाशित करते हैं, उन्हें शक्तिशाली बना देते हैं। श्री माता जी लेफ्ट सहस्रार से आने वाली कोई भी दोष बाधा हमारे ईड़ा नाड़ी में प्रवेश न कर सके। इसी हेतु हमें भैरवनाथ जी का सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। हमारे स्वयं के भैरव को पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महाकाली है, भद्रकाली है, काली कल की है। हमारे महाकाली को पूर्ण रूप से जागृत कीजिए। उनकी सारी शक्तियाँ स्वयं चलित कीजिए। हमारे ईड़ा नाड़ी में स्थित सारी नकारात्मकता, सारा भूतकाल,
जो हमें परेशान करता रहता है, हम उसमें ही मंडराते रहते हैं। ऐसे सारे भूतकाल, सारे मनोविकार को भूमि माता में खींच लीजिए। श्री माता जी, हमारे लेफ्ट मूलाधार में स्थित जो भी दोष बाधाएं हैं, जो मैं मेरे पति हम दोनों के मातृ पितृकुल के कई पीढ़ियों से हमारे अंदर आ बसी है, उन सारे दोषों को, नकारात्मकता को भूमि माता में खींच लीजिए। हमारे मूलाधार को स्वच्छ करके उसमें सिर्फ अबोधिता भर दीजिए। श्री माता जी, हमारे लेफ्ट स्वादिष्टान में जो भी अशुद्ध इच्छाएं है, अशुद्ध विद्या है, जो मैं मेरे पति हम दोनों के मातृ पितृकुल के कई पीढ़ियों से हमारे अंदर स्थित है, उन्हें भूमि माता में खींचकर हमारे लेफ्ट स्वादिष्टान को पूर्ण रूप से स्वच्छ करके उसमें आपका निर्मल परमेश्वरी ज्ञान भर दीजिए। श्री माता जी, हमारे लेफ्ट नाभि में जो भी दोष बाधाएं हैं, जो स्वयं हमारी नहीं है, मैं मेरे पति हम दोनों के मातृ पितृकुल के कई पीढ़ियों में से हमारे अंदर आ बसी है और उसका असर भी हमारे बिहेवियर में आता है, उन सारी नकारात्मकता को भूमि माता में खींच लीजिए। श्री माता जी, हमारे नाभि को स्वच्छ कीजिए, संपूर्णतः एब्सोल्यूट बनाइए। श्री माता जी, हमारे रिश्तेदार जो समय के पहले चल बसे, उनकी इच्छा न होते चल बसे, ऐसे सारे अतृप्त आत्माओं को गति प्रदान कीजिए और हमें भी उनसे मुक्ति प्रदान करके हमारे नाभि को स्वच्छ कीजिए, उसमें विश्व निर्मला धर्म प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारी महाकाली जो सदियों से क्रोधित है, उसको शांत सौम्य कराकर, शालीन बनाकर हमारे लेफ्ट नाभि में प्रस्थापित की गृहलक्ष्मी स्वरूप में प्रस्थापित कीजिए। गृहलक्ष्मी जो एक माँ का स्वरूप है, माँ की सारी शक्तियाँ, माँ के सारे गुण उसमें रहते हैं, ऐसी माँ हमें बनाइए ताकि सबके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक हो। हमारे अंदर की सारी लक्ष्मियों को जागृत करके हमें महालक्ष्मी तत्व में ले चलिए। हमें हमारा संपूर्ण उत्थान प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री भद्रकाली है। श्री माता जी, हमारे अंदर की और आसपास की अभद्रता को दूर कीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री काली कल्की है, जो हमें हमारी स्वच्छता प्रदान करके हमें सत्ययुग में ले जाने वाली है, हमें हमारा मूल ऋषि का गोत्र प्रदान करने वाली है। श्री माता जी, हमें ईड़ा नाड़ी का संतुलन प्रदान कीजिए, हमारे ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ चैतन्य में बनाइए। राइट हैंड श्री माता जी के समक्ष लेफ्ट हैंड कोने में मोड़ के आकाश की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती है, आप ही साक्षात श्री हनुमान है। श्री माता जी, महासरस्वती की क्रिएटिविटी हमें प्रदान कीजिए, उनकी नवनिर्मिति हमें प्रस्थापित कीजिए, ताकि सहज का हर एक कार्य हम क्रिएटिविटी से करें। श्री माता जी, हमारे अंदर के सुप्त कला गुणों को जागृत करके हमें शारदा देवी के आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें हनुमान जी की सारी शक्तियाँ प्रदान कीजिए, नवधावित शक्तियाँ प्रदान कीजिए, ताकि लेफ्ट सहस्रार, राइट सहस्रार से आने वाली कोई भी सुप्रा कॉन्शियस या कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस की बाधा हमें तकलीफ न दे सके। श्री माता जी, हमें हनुमान जैसी शुद्ध निर्मल भक्ति में डुबा दीजिए। श्री माता जी, हमारे स्वयं के हनुमान को जागृत कीजिए।
उनका वायु तत्व जागृत करके हमारे पिंगला नाड़ी में स्थित जो भी अतिरिक्त ऊष्मा है, जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकता है, उसे आकाश में खींच लीजिए। श्री माता जी, हमारा जो चित्त चंचल है, अस्थिर है, उसको शांत स्थिर करा के आप ही के चरणों में लीन कीजिए। हमारे चित्त में हिमालय की ठंडक प्रदान कीजिए, चंद्रमा की शीतलता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारी पिंगला नाड़ी स्वच्छ, शीतल और संतुलित कीजिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के समक्ष, संपूर्ण चित्त सहस्रार के ऊपर। श्री माता जी, हमें आज का आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। आपके अमृत वचनों को सुनकर जो भी हम ज्ञान ग्रहण कर सके, वो ग्रहण करने की शक्ति, धारणा शक्ति हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी के अमृत वचनों को श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी। Today is a very important day in the history of spirituality. The Ekadasha Rudra incarnation has been prophesied by every prophet that the Ekadasha Avtara will be coming and it will destroy all the negativity, all the anti-God activities. Ekadasha principle actually is built in wide because when the saints wanted to cross the ocean of illusion through their meditation, they are hindered, troubled, tortured and slaughtered by negative forces. These negative forces came up through the feelings of human beings. When human beings feel, they saw other people who were so much better than them, and they saw that they are nowhere compared to many other human beings, or sometimes out of anger and temper, the villainous temperament grew into them, and then it formed this anti-God negativity in the void. So void has given actually the villainy to come into form. As you see in Saraswata, we must have seen it many times, that when you go to a wrong guru or to a wrong person, or you do unauthorized worshipping, your left void catches.
So in the left void, all those destructive forces acted. Also, in the process of evolution, there were many plants, animals who were destroyed because they were not in the center, because they were egoistical, some were cunning, some were too big, some were too small. And they were all thrown out. And when they were thrown out, they felt that they must react. So they went into the collective subconscious and came as subtler entities to harm the people who were ascending. Like we see these days viruses that attack us. These are the plants which have gone out of circulation. After some time you will find tobacco will go out of circulation. Many drugs will go out of circulation. All these can form a kind of anti-growth, anti-development, anti-freedom forces within ourselves. So, in the area of void, these horrible negative forces were formed. In the same way, many human beings who were born and tried to assert their ego, went into egoistical processes and thought that they can control people, they can have their domain over all the human beings, they can overpower the whole world. All such people form a very powerful institutions in the history. And today also there are many such forces coming into existence. These forces are building and destroying every moment. They are building into our void area and then they are destroyed. These people, when they come from the right side, from the right void, we call them as supraconscious. And those who come from the left side, we call them as the subconscious entities. All these entities do exist. As human beings are the image of God, as in the collective subconscious of God Almighty, and also in the supraconscious of God Almighty. These forces still remain till they go to hell. In the same way, in us also, in human beings also, these forces exist. And they try to overpower us. It's very remarkable that we had this puja in Austria. Because in the geography of this world, Europe is the void. And in that, Austria is the one where we should have anti-negative forces built up. To
fight the negative forces. It's such a right place to have this puja. And I'm really thankful to all the Sahajas who have chosen this place for Ekadasha Rudra Puja. In the modern times, as we see today, these forces are acting in very secular manner, in a manner that human beings cannot understand. And they are driven into it. If you see the way we are drifting from reality, the way we are getting tempted by superficial, nonsensical things, the way we have horrible diseases waiting at our doorsteps, we realize that we are standing on the verge of falling into a Maya from where we may never rise, we may never come up. So we have to understand what is within us which can destroy forever these anti-development, anti-evolutionary, anti-constructive temperament of the nature. In the nature, if you see, everything circulates in a very regular manner. For example, in the winter time, the leaves have to fall down because the nitrogen of the leaves has to go into the Mother Earth to nourish the trees. Moreover, the Mother Earth must get sun's rays. So there should be no leaves. And the sun's rays can penetrate into the Mother Earth to nourish her. Then the trees, when they are nourished, they again become green and lush, so that they receive the sun's light and make chlorophyll out of them. Also, they suck in the water from the Mother Earth and throw them in the atmosphere to act as catalyst for the rain to come. When the rain comes during the rainy season, they are again nourished with water. The life again, they lose all their leaves and the whole circle goes on in a beautiful manner. There is no reversion, it's just a continuous circle going in a very beautiful manner to create and recreate. But with the interference of man, nature gets disturbed. Also, you can enhance the nature. You can save the nature's destruction, which could be natural also. But when you get your realization, when you get your realization, then with your vibrations, you can see all natural things that are decaying under the modern influence. So, first of all, we see the effect of realization, how it acts as Ekadasha Rudra. It destroys
the negative forces which are trying to destroy the nature. One day I am sure we all will evolve to such a state that even your glance is sufficient to make the trees grow, to make the fruit sweet, to make the flowers fragrant. That's possible because our growth is showing results. Slowly, it's showing results because you should not be stunned, you should not be shocked, so that you can see for yourself what you are and what you are achieving. But to allow this force within us to grow, first of all, we should be very introspective. We should try to see ourselves. What is happening to us? We must watch our steps. Are we moving towards our construction or towards our destruction? What are we doing? This Ekadashi Rudra force, which is within us, is so powerful, so very powerful, that not only in nature, but also in human beings it acts. It acts in a way that you are shocked and surprised. There's a gentleman whom I had given realization, he was dedicated, but he is not in a place where he can come to surgery. And some people tried to trouble him very much. And he told me they all met with an accident and all of them are now lying in the hospital. So I said, I didn't do anything. By their own means, they have crossed the limits. And if you cross the limits of goodness, naturally you go something, what we call as evil. And if you fall into the ditches of evil, you have to suffer. But also it acts on surgeries. I've known of a surgery who tried to be a little funny about money. I didn't think that he should be punished. I never thought of such a thing, that he should be punished really. But they acted, his own forces acted against him. And he got so sick, so very sick, that in my presence used to just shake like a dried leaf. I never even told him that I know what you are doing. In Sahaja Yoga, when you enter, you have to know that slowly and steadily you are climbing up a very steep road, because it has to be very quick. So the rise is very steep. And when you are climbing up that rise, you have to know if you don't go further, you will slip down. But if you move sideways, you will fall down. You may say that, Mother, we are moving sideways, so there is a movement. Because you are falling down also, one may feel the movement. That is the movement of destruction. So you must have proper discretion about yourself. Are we ascending or descending? Are we losing our steps? Are we going higher in our steps? Which sometimes we do not realize that we are amidst
the worst possible negativity in the history of this universe. In the older times, there would be only one Rakshasa at a time one had to deal with. It was so easy to deal with one Rakshasa. But to deal with so many of them already needs a lot of work. But the worst part about it is that in the modern times, these Rakshasas have entered into the brains of people. Because of their teachings, because of their delusions, people have accepted them. And these people are my children. They are seekers. They are seekers of truth. It's like people using children for a ransom. They put the children before me and I don't know what to do. If I try to kill the devils, then the children are in front. So which is the best way is to destroy in modern times. Of course, they can be killed, they can die. But how am I to save the people whom they have polluted, whom they have wronged? It's a very, very difficult and very delicate work. For that, the only way is to bring them to a point where they get completely exposed, they are debased, and the whole world knows who are they, how they look like. So instead of fighting them from outside, or just asking Yama to go and kill them, its best is to make their own being got into the well of Ekadasha, so that they are exposed to people by their mistake. That is the advantage, I should say, a part of the ugly game of falsehood. Falsehood always gets exposed. You can see writ large on their faces their hypocrisy, their evil intentions, and their satanic schemes. As I said, that modern times are the worst for these attacks. We have to be more alert, more aware, more understanding. As Sahajas, you all are very well equipped. But we all the time forget that we have got our vibrations, that we have got a new awareness of vibrations. We have got vibratory awareness. And these vibratory awareness are a kind of a messenger which is absolute, which communicates and which tells us what's wrong with others, what's wrong with us. But if you start taking your decision through your mental, emotional enterprises, then be sure that you'll be misguided. Because all these endeavors are one-sided. Like a mental projection goes like this in a linear way, falls upon. And also a emotional one is the same. Even the physical is just the same. But when you start seeing through the vibrations, what do? Is to ask your spirit to communicate to you. And the spirit is the absolute knowledge. So you do not succumb to your conditioning or to your ego or to any other training or any other guru, but yourself.
So it is very important for all of you to understand that we are not going to take any decision on our mental level, but on our vibrations. Many people think that if I say something about someone, maybe because they have reported it to me. But supposing if I am the source of all the vibrations, what is there for me to get reported? Why should anybody report to me? If they want to report, they may, but I know what exactly is the situation. Once in Ravani, I was waiting in the guest house, and about 5-6 professors came on their bikes. Came and told me, "Mother, we have come to warn you about a particular gentleman." I said, "Who is this gentleman?" They gave the name of this gentleman. I said, "You have to be very careful, he's a politician." I said, "All right, that's all you know about him?" They said, "Yes." So you have to be very careful. I said, "Now I'll tell you about it. That this man has not married his wife. She's the wife of somebody else, and he has eloped with this woman. And the child is his. But this lady was raped by him, that's how he's got the child." When I started telling them, they all started raising their eyebrows and opening their eyes. I said, "Mother, how do you know?" I said, "You will find out. Whatever I have seen, is it true or not?" They were completely stunned. They went back and then reported to me that, "Mother, it's surprising what you said was the truth." So on vibrations, you can know everything. But those who try to decide things without vibrations can make mistakes till you reach a certain stage where you don't have to spread your hands to ask, just to know. But to go to that stage, you have to first of all surrender your discretion to vibrations. Now some people don't have proper vibrations. Maybe their Vishuddhis are bad. They should take proper care of their Vishuddhis. Even then, if they don't have some physical problem on the Vishuddhi, they can feel it within themselves. What chakras are catching, what is happening to this gentleman. Normally, because we are in modern times, the people who are possessed appear more beautiful than the people who are not possessed. Once we had a lady came to us in our program. She was completely possessed, thin like a beanstalk, absolutely. And everybody, that was the beginning of surgery, felt that what a beautiful woman has come. I told them to keep her out of the hall for the time being. They couldn't understand. When she got cured, and she looks very different now. To me, she is very beautiful. The beauty that was seen at that time must be the camouflage of the negativity that people saw. Like as you see these cinema actresses, cinema actors, and some of the clowns who go as presidents, this, that, you can see little art in their faces, how horrid they are. But unless and until you yourself are of that level and sincere, you won't be able to make it out. Today, what we are doing is to awaken within us this Ekadasha Rudra force, which will help you to fight your own negativity and fight the negativity of the whole world. Now we have so many hands, so many people with different, what we call them, ayuda, means the weapons. All these weapons are within. They are within you. And you can definitely use them. But first you must know what weapons you are carrying and how to use them.
There's so much blind faith. There is so much of wrong ideas, so much of organizational fortresses they have built. All kinds of nonsensical things are going on in this world. But they'll all be finished. Nobody will know anything about that except that they might know as some villainous creatures on this earth. Ultimately, the living will exist. We have to know that we know the living force, and we have to be very sure about it, and we have to be proud about it, that we know what is the living force. Then this Ekadasha Rudra Vinyas becomes very strong. Anybody who tries to trouble you will have a nice punch. Any organization which tries to subdue Sahaja Yoga and it in any way harm it will have a nice time. Like I went for Buff Defense show and he misbehaved. Next week that show was closed down. No more. In India, there was a newspaper which tried to make a funny article out of me. The newspaper was closed down for months together. Just it happens. I don't say anything of the kind. But the way things happen is very surprising. How this Ekadash is now acting. Also, the most significant thing is that this Ekadasha is going to act only in Kali Yuga, in these modern times. Earlier, it was not going to act because there was hardly one guru who is today a guru, must have been a Sitan last time. Only one horrible Rakshasa there. So it was very easy to kill. To kill Kamsa, it took no time for Sri Krishna, or to kill Ravana, it took no time for Sri Rama. रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम् पाशपाणि चक्रपाणि मूषकादिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम् पाशपाणि चक्रपाणि मूषकादिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्यज्योति वज्रकोटि निर्मलम् चित्रमाण भक्तिजाल भालचन्द्रशोभितम् कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम् थैंक यू श्री माता जी। श्री माता जी, आपने हम सभी से आज का ये सामूहिक ध्यान करा लिया, हमारी चक्र और नाड़ी शुद्धता कराकर
हमें इस ध्यान की गहराई में ले गई। श्री माता जी, हम आपके जन्म जन्मांतर के ऋणी हैं। हमारी शरणागता स्वीकार कीजिए। हमारे अनंत कोटि नमस्कार आपके श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। श्री माता जी, हम सभी सहजीव को आपका उत्तम से उत्तम माध्यम बना के पूर्ण संपूर्ण विश्व में सहज फैलाने का कार्य हम सभी से करा लीजिए। यही हमारी शुद्ध इच्छा आपके श्री चरणों में। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। आज का मॉर्निंग मेडिटेशन यही संपन्न हो रहा है। हम सब श्री माता जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और हमारी कुंडलिनी उठाकर कवच को धारण करेंगे। सभी सामूहिकता का इस ध्यान धारणा में जुड़ने के लिए हृदयपूर्वक आभार। जय श्री माता जी। हेमदासुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते